Tell me something about yourself. Sir, my name is Udit Narayan Tiwari. I am basically from Katni, near Jabalpur, Madhya Pradesh. Sir, I have completed my schooling from Kendriya Vidyalaya Ordnance Factory, Katni. And talking about my articleship, I have completed my articleship with basically a mid-size firm, but it is well known for its taxation work. In my articleship, I have completed tax audit, bank audit, statutory audit, GST, and income tax mainly. Talking in my something soft skills. So basically, when I entered articleship, it was an introductory period of GST. So there were a huge hodgepodge regarding GST. So that time I have learned how to work composed and calm, handle work pressure, how to handle government pressure. And especially when I entered a CA course and I come to know about Big 4, especially PWC, about its culture. So I have always have dreamed to be in PWC. And sir, for this I have attended many seminars and courses. So basically, I can conclude that I am a kind of industry-ready person. I have not come here to simply experience this interview, but to join it and live my dream with PWC. गलत हो गया तेरा। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है, थोड़ा गलत हो गया। हाँ, कम कोई बोलना दिक्कत, इसको। ज्यादा कहानी हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो तुम फिगर हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई, माय नेम इज उदित तिवारी, आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। I have done articleship from XYZ firm, which is well known for state and internal audits. Okay, audit वाला है, it is well known for state and internal audit. In the state audit, I have done statutory audit. I have done walkthrough, taste of control, taste of detail, analytical review, audit areas of fixed asset inventory, trade receivable, trade payable. These are the areas which I have worked on: Caro reporting, schedule 3 disclosures. I wanted to join your company because I was deeply interested to join a Big 4, and I always wanted to get into a Big 4, and state audit provides something that I always wanted to get into. So I would be grateful if I can get this opportunity. Do let me know if anything else you would like to know from me. एक और बोलो फिर से। बोलो। Sir, my name is Udit Narayan Tiwari. I am recently qualified chartered accountant. I have completed my articleship with a mid-size firm, but it was basically well known for its statutory audit, tax audit, and banks audit. Sir, in my articleship experience, I have learned about work through test of controls, efficiency of testing controls, and in soft skill, I have learned how to handle work pressure, how to deal with the government pressure, how to handle clients. And when I entered CA course and come to know about the cultures of Big 4, so I have always dreamed to attend, be a part of PWC. So, sir, basically, I'm an industry-ready person who has come here to join PWC and live my dream with PWC. Go good. लास्ट में बोलना, डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो अबाउट मी। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला जो आंसर है ना, ये बहुत हम लिखा भी है एक्सेल शीट में। ये तुम 5-6 बार एक बार है ना और रिवाइज कर लेना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, वो सब ऑडिट एरियाज, और आई वांट टू ज्वाइन बिकॉज़ दिस इज अ ड्रीम कंपनी, ये एक बार तुम 5-6 बार एकदम रोज रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और टैक्सेशन एकदम नहीं आना चाहिए, याद रख लेना होल से भी। और में बैंकिंग है तो बैंकिंग के बारे में ज्ञान देना है, बैंकिंग है वो याद रखना। ठीक है, व्हाट इज कंट्रोल टेस्टिंग? Sir, basically, control testing is the way how to check whether these control are properly designed, and number two, to check the efficiency of control. In case of design, we should check whether the proper segregation of duties is there and other control area, and efficiency we check the information come from these control are valid or not, or it is manipulated. जो है ठीक है तुम्हारा आंसर। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बोलना। ठीक है, विल टेक द वॉक थ्रू design implementation and test of operating effectiveness. In the design implementation we check 1 or 2 samples. In the test of operating effectiveness I check 40 to 50 samples ऐसे करके। ठीक है, गुड। तो ज्यादा सैंपल्स देखना है। ओके, व्हाट आर द कारो अमेंडमेंट्स? Sir, basically there are numbers of Caro amendment, but I am telling you some of the major Caro amendments. I am starting with lines that the number one amendment is in fixed asset. There were no clause of Benami property in earlier Caro, whereas in Caro 20, 22, 20, there is a clause for fixed asset about Benami property. Number two, in inventory, there were no clause of discrepancies in inventory. It has only to just report the inventory. But in Caro 20, if discrepancies are more than 10%, then now auditor has to report the discrepancy.
In talking about fraud, earlier there was no points regarding the fraud complaint. However, in this CARO, new clause is added to auditor need to report number of cases complaints against fraud in company. Talking about the litigations and long-term borrowing, no fixed schedule were there, but in CARO 20 there is a fixed schedule of CARO. A special consideration of change in CARO that in earlier CARO there were no clause for auditor resignation and objection. However, in CARO 20 there is a clause regarding auditor objection and resignation for that company. So these are some major changes which I have. अच्छा पॉइंट भूल गया, कैश लॉस CSR, ये सब पर पॉइंट्स तो है। इन पॉइंट्स में वो पॉइंट्स है, बट उसमें बोलना क्या है अंदर? वो नहीं पता क्या? कैश लॉस तो था ही तुम्हारा, इजी पॉइंट है, तुम देखेगा तो कैश लॉस, वेदर बिजनेस इज इंक्रीजिंग सम कैश लॉस और नॉट ड्यूरिंग द ईयर। तुम अगर गूगल भी करेगा तो कैरो अमेंडमेंट तुमको इतना इजीली मिल जाएगा कि कैश लॉस तो कैश मैंने लॉस बोल विद दूंगा बिजनेस हैज दूसरा। इंकर्ड कैश लॉस ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा फिर समझ गया सीएसआर का दूसरा। तो जमा करने का पॉइंट है कि सीएसआर को लेके से अनस्पेंड सीएसआर है तो जमा करना पड़ता है शेड्यूल 7 का फंड में। और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का 30 डेज होता है, अदर देन ऑनगोइंग पे 6 मंथ्स ऑफ डेट हो तो फाइनेंशियल ईयर से कुछ पॉइंट है। कैश लॉस ये इंटरनल ऑडिट का पॉइंट है। इंटरनल ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, इंटरनल ऑडिट commensurate with the size and nature of business, मतलब the business has a internal is commensurate with the size and nature of business, वो एक पॉइंट है। इंटरनल commensurate size and nature of business। कैश लॉस इनकर हुआ है क्या? कैश लॉस हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉस होता है वही होता है ऑपरेटिंग लॉस। फिर आपका सीएसआर का पॉइंट है अनस्पेंड सीएसआर, तो वो पॉइंट नहीं हो रहा है। अनस्पेंड सीएसआर का जमा कराना पड़ता है जो स्पेंड नहीं करके रखा है सीएसआर को ऑनगोइंग अदर देन ऑनगोइंग। फिर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर अगर होता है तो न्यू ऑडिटर को उसका रीजन मांगना पड़ेगा, ओल्ड ऑडिटर से क्यों रिजाइन किया था। फिर अगर एडवर्स रिमार्क है, अगर तुम्हारा सब्सिडियरी कंपनी में अगर एडवर्स रिमार्क है सब्सिडियरी कंपनी में तो वो पेरेंट कंपनी में भी जाएगा वो एडवर्स रिमार्क। ये सब पॉइंट, लास्ट का जो 5 पॉइंट है वही अमेंडमेंट है। जो लास्ट का 5 पॉइंट कार होगा वही अमेंडमेंट है, एडवर्स रिमार्क। इसका हम शॉर्टकट भी है एक्सेल शीट में, इंटरनल ऑडिट CAGR, अगर तुम देखा होगा तो एक गोइंग कंसर्न को लेके पॉइंट है कि कोई अगर अनलाइबिलिटी वगैरह है लास्ट का तो विद इन वो 12 मंथ्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चार पर ये कारो अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, तुमको थोड़ा सा इसको अभी रात का 4 बजे तक मेहनत करना। कारो अमेंडमेंट्स टेल मी समथिंग करना, ठीक है। शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। सर, इन शेड्यूल 3 अमेंडमेंट देयर आर लॉट ऑफ न्यू अमेंडमेंट्स आर देयर। ये बेसिकली अभी मैंने पढ़ा है, अभी जब से वो PWC का आ गया सर, मैं आपको बता रहा हूँ। शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स बोलो। Okay, now the unlisted company also have to disclose the list of promoter stakeholder change. Number one. Number two, it has to वही be बोला था पॉइंट बोला ही था नहीं नहीं सर। नहीं, जब वो PWC का आ गया ना तब से मैंने पढ़ना चालू करा फिर ये सब चीजें। हम बोला ना पढ़ के रखना चाहिए, यू से यू कैन नॉट हाँ, राइट द लक, दिस इज समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, यू कैन नॉट टेक बाकी चांसेस। yes, ठीक है, अभी भी टाइम है, यू कैन डू इट। शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स, लॉट ऑफ टाइम। रात का 4 बजे शेड्यूल तक 3 पड़ेगा, रात का 4 बजे तक पड़ेगा तो आई थिंक सो दिस कैन बी डन। ठीक है, शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। हाँ, the first amendment is that in now an unlisted company also change of promoter stakeholder should be disclosed. Number two, security deposits are now changed in other non-current assets. Non-current assets. Number three, rounding off is of all income. लॉन्ग टर्म Basically, लोन total. एडवांस में था, नॉन करेंट एसेट हो गया। तुम्हारा एजिंग को लेके काफी पॉइंट्स है, वो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैंने 5 पॉइंट ही रटे हैं उसकी। हाँ हाँ ठीक है। 5 पॉइंट मैंने रख लिए कि लॉन्ग टर्म लोन विच आर करेंटली paid now should be displayed in short term liability, and in last relationship with stock of company should be disclosed. नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सॉल्व। एजिंग का पॉइंट बहुत इजी है, जो भी एजिंग का पॉइंट है ना, ट्रेड पेपर, ट्रेड हाँ, रिसीवेबल्स और उनकी एजिंग बनाना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, उसका एजिंग बनेगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम बोलना है वहां पर। एजिंग का पॉइंट है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, और फिर उसके बाद जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, एजिंग, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग। एजिंग में कितना है? ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तुम एजिंग का ही 4 पॉइंट है, तुम इतना बोलते हो तुम्हारा शेड्यूल 3 अमेंडमेंट खत्म।
पता है वो कैपिटल एक ही में निकाल दिया। कौन सा हाँ, आपने बोला? कैपिटल WIP और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तुम्हें एक्सेल सीट में तो है भाई ये सब चीज, इफ यू गो थ्रू हाँ दैट प्रॉपर्ली तो तुम्हारा हो गया। और चेंज इन द प्रोमोटर शेयर होल्डिंग का लिस्टेड एंटिटी का भी अभी ये एप्लीकेबल हो मतलब गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस था, अब उसमें चला गया किसमें, अदर करेंट लायबिलिटी साइड अदर में। अदर करंट अदर फिक्स्ड ठीक है। अदर नॉन फिक्स्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? Sir, basically depreciation is of a regular year in year. However, in impairment, it is a sudden loss of. Amortization भाई, डेमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। Sorry. I am thinking about impairment. सुनो, Basically, depreciation is implemented or basically applied on a fixed asset. However, amortization is implemented on intangible asset. Depreciation is ठीक है, covered under Ind AS 60. Amortization is covered under Ind AS 38. ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन टेंजिबल एंड अमोर्टाइजेशन ऑन इंटेंजिबल। व्हाट इज इम्पेयरमेंट? व्हाट इज Uh, इम्पेयरमेंट? Impairment is a sudden loss of asset, either by technological obsolescence or sudden tear and wear, and so it is calculated as current asset minus recoverable asset. नहीं नहीं, Sorry, कैरिंग I am अमाउंट, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग carrying अमाउंट amount माइनस रिकवरेबल अमाउंट, सीए माइनस recoverable आर है। amount. ठीक है, C minus कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इम्पेयरमेंट इज एडवांस डेप्रिसिएशन। advance. एडवांस लेवल का डेप्रिसिएशन है कि बुक वैल्यू से नीचे चला जाता तब इम्पेयरमेंट होता है। व्हाट आर द एक्सटर्नल Okay. इंटरनल इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट? Sir, external indication of impairment is sudden loss of value of asset in market price, basically market depreciation, decline market price, technological obsolescence. However, an internal indicator of impairment is accident of that asset, sudden accident of that asset, or ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, low ब्रेकडाउन use ऑफ of that. मशीनरी, फायर, ब्रेकडाउन। ठीक है, Okay. लिख के रखो ये सब, ही पूछेगा। ऑडिट रिस्क, Sir, audit risk basically which even after auditing using after applying substantive procedure, even those risks cannot be analyzed by auditor. टाइप्स ऑफ Even ऑडिट after रिस्क, uh, वो वाली ROMM वाली बतानी है. टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क, Inherent risk, detection risk, and control risk. व्हाट इज materiality? Why do we calculate materiality? Okay, sir, materiality is the concept, the amount or the figure which may impact the users of financial statement decision. So there are three types of materiality: overall materiality, performance materiality, and CTT. We calculate materiality to basically simplify our work, that we do not engage in such type of amounts or figure or account balance which are not important for framing our opinion. Okay. Why do we calculate materiality? Sir, we calculate materiality to reduce our work, by which we will not engage in such immaterial amount and waste our time and increase the effectiveness of audit. Cost constraint, Okay. save time and cost. Effectiveness of audit बढ़ेगा ना. Time and the cost also is saved. Okay. What are the three levels of materiality? Kindly explain. There are three types of materiality. Overall materiality. So overall materiality is the materiality where it is set on the basis of some consistent templates, like if revenue is consistent, profit is consistent, or cost is consistent. And the other performance materiality is created to set a buffer from overall materiality to performance materiality, whereas the CTT is simply ignorable amount which auditor need not to think about it or do any action on it.
Kindly elaborate on performance materiality. Sir, if we are elaborating performance materiality by taking an example, basically if an auditor set overall materiality of 5 crores, so he need to select performance materiality below the overall materiality, that is 5 crores. So he may set the performance materiality up to 4 crores. So by fixing the performance materiality, he may take a buffer of 1 crore. So he may not, वो आ रहा है हिंदी मेरे को, बट वो इंग्लिश में. What is the percentage of overall materiality that we give in performance materiality? That is below than overall materiality. मैं एक्सेल सीट से नहीं पढ़ा है, हमको लगता है तो बहुत जगह से पढ़ने का कोशिश किया, सबसे बड़ा गलती वही की है। वो ही गलती की है। 50 to 75% ऑफ द, मैं एक्सेल सीट पढ़ा है, उससे लैंग्वेज पढ़ा एक बार। एक्सेल शीट में क्वेश्चन जरूर देखे हैं, बट आंसर उनके बहुत ज्यादा नहीं देखे, आंसर क्योंकि तो इधर गलती उधर कर की दिया भाई, आंसर उसमें ही तो था सारा। एवरीथिंग वाज मेंशन्ड इन दैट आंसर। वो कंप्यूटर से देखना पड़ेगा, मोबाइल से नहीं देखना होगा। 50 to 75% ऑफ द ओवरऑल मेटेरियलिटी होता है वो। व्हाई डू वी कैलकुलेट ओवरऑल मेटेरियलिटी? सर, वी कैलकुलेट ओवरऑल materiality to report that, to basically frame our opinion. If amount misstatement go over overall materiality, then auditor need to discuss with think, and if it is not solved, then he may qualify the report. And if an amount is below the overall materiality, then he need not to do such action to report the opinion. नहीं हो रहा भाई। See, performance materiality is a 50 to 75% of your overall materiality. Why do we calculate performance materiality? To be on a safer side. ठीक है, To create a safer buffer. side। हाँ, safer side. So the moment the uncorrected misstatement goes above your performance materiality, then we will ask the management to correct the misstatement. If they do not, then we qualify the opinion. We put a qualified opinion. If it is below your if it is below your performance materiality, then we don't do anything. We ask the management to correct the misstatement, but we do not qualify the audit report. तो पीएम से ऊपर होगा तो हम लोग उसको बोलेगा कि तुम चेंज करके दो, नहीं करके देगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन। पीएम क्वालिफाई से कर देंगे, एकदम से पीएम कुछ से नहीं करेगा, तो कुछ नहीं होगा. समझे क्या? तो हम लोग ओएम का वेट नहीं कर रहा है, वी आर नॉट वेटिंग फॉर द ओएम लेवल टू ब्रीच। मतलब परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी ब्रीच होने से इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस लॉजिक? For performance materiality. Why we are not waiting for the overall materiality to breach? Performance materiality लाया क्यों है हम लोग ने? Why it is the concept of performance materiality? सर, इस लेवल पे हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्म ओवरऑल मटेरियलिटी अगर ब्रीच हो गया तो फिर वो पहले ही रिपोर्ट में हो जाएगा ना. हम डिस्कस किस पे करेंगे? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे डिस्कस हो सकती, बातें चेंज हो सकती हैं. देखो, अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ओवरऑल मेटेरियलिटी के ऊपर चला गया और तुम अगर क्लाइंट को बोलेगा चेंज करने के लिए, क्लाइंट हैरेस हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट का डेट आएगा, बोलेगा अभी क्यों बताया? इसलिए हम लोग वेट नहीं करता ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल का ब्रीच करने का। हम लोग जैसे परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी ब्रीच करेगा तो ही हम क्लाइंट को बोलेगा कि चेंज करके क्लाइंट से देने के। डिस्कशन करेंगे. हम लोग वेट नहीं करने तो क्लाइंट गुस्सा हो जाएगा ना, जब ओवरऑल मेटेरियलिटी का वेट करेगा तो। लास्ट मिनट तुम इंटरव्यू के लिए एक दिन पहले पढ़ रहा है कि एकदम इंटरव्यू का दिन ही पड़ेगा, राइट? वही तो है ना। दिस इज द लेवल, ओके, वेयर द ऑडिटर स्टार्ट्स परफॉर्मिंग। दैट्स अ परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, नाम ही है परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। ये मेटेरियलिटी लेवल यहाँ पर ऑडिटर परफॉर्म करने लगेगा, जैसे मिसस्टेटमेंट हुआ तो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। वी विल नॉट वेट फॉर द ओवरऑल मेटेरियलिटी लेवल टू ब्रीच। समझ रहे? ये मेरे एक्सेल सीट में भी यही चीज है, हम आपको तो कहा देता है। ये लैंग्वेज को पढ़ेगा ना अच्छा से तो इसमें एवरीथिंग इज मेंशन प्रॉपर्ली। तुम आज ये गो थ्रू करेगा तो तुम्हारा हो जाएगा एकदम इजीली। लैंग्वेज को पढ़ेगा ना तो ये देखो लैंग्वेज यहाँ पर मैंने लिखा भी है। दिस इज 50-75% वी कैलकुलेट, सो वी डोंट वेट फॉर दिस, इज अ हेयर कट, इफ इट इज गोज अबव वी मेक द डिफरेंस। ये सब करके पढ़ना है, ठीक है? आप तुमको ये बताओ कि ओवरऑल मेटेरियलिटी क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है ओवरऑल मेटेरियलिटी? Sir, basically overall materiality is calculated on the basis of there are a number of factors to calculate overall materiality. One should check the type of industry, type of ownership, and objective of the organization, and the previous history of the company. By analyzing all these factors, auditor may consider overall materiality. कैसे कैलकुलेट करेगा? पर हाउ विल कैलकुलेट इट? By setting a benchmark. हाँ, बेंचमार्क कितना होगा बेंचमार्क? Sir, 5 to 10%.
कि तुमको अच्छा से बोलना पड़ेगा। रेवेन्यू अगर लेगा तो 2 to 5%, प्रॉफिट लेगा तो 5 to 10%। सब लिखा है उसमें एक्सेल शीट। एक्सेल शीट कंप्लीट करेगा, इजी हो जाएगा एकदम। 2 to 5% तुमको, और अभी कुछ भी रेफर नहीं करना है एक्सेल शीट छोड़ के। सर है आप ना? मेरे को एक्सेल, हाँ वो एक्सेल शीट में बता दीजिए कौन कौन से पेज एग्जैक्टली मैं पढ़ लूँ तो मैं रट लेता हूँ उनको भी सही। वो उसमें सारा ही करना है भाई, ये जितना भी है ना नहीं तुमको। उसमें क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कुछ पेज है ना कि ज्यादा नहीं है बैंकिंग। भाई। ये देखो, ये मेटरलिटी, ये ऑडिट एरिया तुमको मोटा मोटी तुम बोल देगा। डिलॉयट यूएसआई, हाँ ये जो ग्रीन ग्रीन करके रखा है, ये सारे अदर्स तुमको आता ही है। बिहेवियर रिलेटेड, कारो, शेड्यूल 3, ऑडिट रिपोर्ट एलिमेंट्स, डिलॉयट यूएसआई। दिस इज नथिंग यार, हम बता रहे हैं ना। सीए का कोर्स करने वाला आदमी के लिए इतना इतना छोटा सा कंसाइज है, बस इतना ही तुमको करना है। दैट इज ऑल। दैट्स ऑल। इंडिया पढ़ने का दरकार नहीं है इसके लिए। दैट इज 4-5 एक्सेल शीट खत्म करना है फटाफट, पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड करके, खुद पढ़ के रिकॉर्ड कर लेना, तुमको हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है? यस सर। इंडिया 5 स्टेप मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, 5 स्टेप मॉडल। ओके सर, basically India's 115 talk about the revenue recognition. So there are five step model specified in India's 115. Number one is to identify the contract. If you that I will also explain this by taking an example. मत करो एग्जांपल, अभी कुछ एग्जांपल नहीं। 5 स्टेप मॉडल बताओ फटाफट। हाँ, फटाफट आंसर बताएगा। हाँ, जब तक वो नहीं बोले एग्जांपल देने, तुम नहीं बताएगा। ठीक है? ओके। Okay. I identify contract, then identify performance and decide or determine transaction परफॉर्मेंस, price. परफॉर्मेंस क्या? Performance and return rights and performance. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। Performance आइडेंटिफाई द obligation. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है? Performance obligation determine transaction price हम्म। and allocation of performance obligation and allocate performance obligation of transaction price एलोकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू द ट्रांजेक्शन प्राइस, इसी है ना? to हाँ, the ठीक है। transaction price and then record the revenue as per that performance obligation. Recording the revenue as per the control transfer over a period of time or at a point of time. At a point of time. इजी क्वेश्चन था ये भी तुम्हारा। डिसअपॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये अच्छा से करना है। ठीक है? ठीक। हाँ, ठीक है। 5 स्टेप मॉडल हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईओएम पैराग्राफ एंड ओएमपी पैराग्राफ? Sir, basically UM paragraph are those paragraphs which are specified in the financial statement. And auditor deemed fit that it is very basic to understand financial statement by the users of financial statement. However, OM paragraph are information which are not specified in financial statement, but auditor deemed fit that it is important to understand financial statement. The EUM paragraphs are examples of the EUM paragraphs are the going concern some pending litigation. However, the example for OM paragraph is the that we have not audited the subsidiary or any other branch. ठीक है। हाउ विल यू द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? सर वो एक बच्चा रो रहा है, हम्म। वो उसकी आवाज तो नहीं आ रही आपको वो बच्चे रोने की? कोई को नहीं आ रहा है। नथिंग। ओके ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हाँ। सर, to audit a fixed asset, one should always check the fixed asset register, take some of the highly valued fixed asset by applying professional judgment, check and recalculate the depreciation, and check whether the properly Ind AS 16 is applied on that. And one should always check the balance sheet assertion like existence of the fixed assets and the properly physical verification of the fixed assets and title deeds of those fixed assets. हाउ विल यू ऑडिट द इन्वेंटरी? Sir, to audit the inventory, one should check the register of the inventory, take some of the sample from the inventories by using professional judgment, check the condition of the inventory and check the proper valuation. At the end of auditor should check whether the proper presentation of the inventory is done in the books of accounts or not. If the balance confirmation is not getting from the banks,
what will you do? Sir, one should apply alternate procedure and ask the reason for the client and record the reason of client in the working paper. After applying alternate procedure, one should check the subsequent uh, clearance from the bank, subsequent transactions from the bank. By this, one should check uh, why bank is not given confirmation. Basically, we have to check subsequent clearance. Subsequent clearance, bank reconciliation लिखो, bank reconciliation and subsequent clearance. Trade receivables. इनका ऑडिट बताना है ना? हम्म. ओके ओके सर, टू verification of trade receivable ना, Right. one should check the register of the trade receivable, select some of the important or highly valued trade receivable by using professional judgment, check the proper interest of it, also may check the existence by using external confirmation. One should also check any subsequent payment provided by the trade receivable or not. And at last, one should check whether the proper presentation and disclosure are there in balance sheet of that trade receivables or not. Won't get the confirmation of the trade receivable, what will you do? Sir, if we won't get the confirmation, then we should check the subsequent receipt of payment from them and proper reconciliation of the account. Subsequent clearance collection you will check. Yes, sir. Subsequent receipt of payment also. Collections. But if you don't get the collection also, वो भी बताओ. Sir, if we do not any collection, then we should check whether any other consideration than cash is received by us, or whether they are a related party or not, or any business agreement or terms between them. We'll ask the management कि the management, the data is not confirming the balances and subsequent collection is also not received. So is there any follow-up mechanism they have made to get the data? And also you will check the actual sale has happened or not, whether it is a fake सेल हुआ है कि नहीं, वो भी चेक करेगा. परचेज में परचेज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उससे सेल का डिटेल्स मांगेगा, डेटर का डिटेल्स मांगेगा, सेल का डिटेल्स मांगेगा, वो सब देखेगा. लॉन्ग वर्किंग आवर्स वो सब हाँ वो कर देना ऊपर में. एक्सपेक्टेड सैलरी हाँ जो देगा दे दो. देखते हैं. What were your major observations in audit? In audits or in my articleship experience? Audit. आर्टिकलशिप एक ही बोलना है भाई तुमको. आर्टिकलशिप में ऑडिट ही बोलना है. ऑडिट का तो बोलो. मतलब मेरे एक्सपीरियंस में जो उनका बताया ना मुझे, ऑडिट ही बताना पड़ेगा तुम्हारा. तो ऑडिट का हाँ, इंटरव्यू audit ही बता. तो टैक्स नहीं बता सकता है. बोलो. Sir, in my experience, once I found in a dal mill that there were ratio of 20-80. So basically 80% of dal seeds were there and 20% of chunni. Basically they said it, chunni is considered. But in that audit, I found that the ratio was not as suitable as industry. But after that, they explained me that this is due to the moisture contained in the seeds. And after finding this audit clarification, then we complete that audit in that way. फेक सेल, फेक परचेज, वो सब चीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वगैरह सब तो दिया. उनने रेशियो बिगाड़ दिया था, मतलब आउटपुट का. मजा नहीं आ रहा था. रेशियो बिगाड़ दिया. मजा नहीं आ रहा मेरे को. थोड़ा सा यहाँ से ना, थोड़ा एक दो चीज यहाँ से बोल देना कि ये सब है ना, पढ़ लो ये करके लिए. एक बार गो थ्रू करो ये, ठीक है. बनाओ के बोलना पड़ेगा. 3-4 ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा. 4-5 पूछता लो. एक बोलने से नहीं होगा. तुम एक ही बोल के चुप हो रहा है. वो लोग बोलेगा 5-6 तू बताओ क्या करेगा. फेक सेल, फेक परचेज, पार्टी ट्रांजेक्शन,
बनाओ ना, फेक सेल, Okay. फेक परचेज, पोस्ट एम्प्लॉइज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अंडर कैपिटलाइजेशन, पेमेंट विदाउट थ्री वे मैच। पेमेंट विदाउट थ्री वे मैच पता है ना क्या होता है? थ्री वे मैच नो सर, क्या होता है? थ्री वे मैच नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं है। थ्री वे मैच होता है पीओ जी आर एन इनवॉइस, पीओ इनवॉइस जी आर एन को बोलता है थ्री वे मैच। पेमेंट कर तो दिया क्या विदाउट द बोलते हैं? थ्री वे मैच किए, पीओ जी आर एन इनवॉइस देखे बिना तुमने कर दिया। एक बार गो थ्रू करना, जितना तुमको आ जाएगा, जो इजी लगेगा। ओके, हाउ विल यू स्टार्ट एन ऑडिट? Sir, to start audit, one should do walkthroughs by, first of all, basically, I am telling you the steps of audit. So basically, one should identify and observe all the business process, then know the control, then observe the effectiveness of control. Then after finding the effectiveness of control, one should decide the nature, timing, and extent of audit. Basically, it is called sample. And by analyzing the risk, one should apply the substantive procedure of it. After apply substantive procedure, one should conclude the audit results. लास्ट एक ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा, ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, एनालिटिकल रिव्यू करना पड़ता है ऑडिट प्लानिंग में। तो एनालिटिकल This रिव्यू is मैंने बोला ना व्हाट इज substantive procedure. वो बाद में आता है Substantive. सब्सटेंटिव। पहले एनालिटिकल रिव्यू होगा, एनालिटिकल रिव्यू होगा, कंट्रोल टेस्टिंग होगा, वो सब होगा, सिग्निफिकेंट अकाउंट देखेंगे, मेटरलिटी लेवल्स, रैप होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। वो आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर आता है ऑडिट एग्जीक्यूशन में। व्हाट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स? So basically, substantive procedure are divided into two parts: analytical procedure and number two is test of detail. So टेस्ट ऑफ analytical डिटेल्स क्या procedure, होता है? sir, test of details are checking the effectiveness of the controls by checking 50 to 40 to 50 documents and वाउचिंग information, वेरिफिकेशन को बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। vouching and verification only. And the analytical procedure are basically find out the बहुत ratio. खराब है आपका। सर क्या बहुत खराब है? ऑडिट ऑडिट बहुत खराब है, सर फिजिक्स। मैंने किया ही नहीं ऑडिट कभी। हाँ वही हमको समझ जा रहा है। कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? Sir, basically, vouching is to simply check the vouchers, existence of vouchers, whereas the verification is validating those vouchers. The वेरिफिकेशन? whether verification is validating those vouchers, that whether the information is correct, whether the quantity and अच्छा भाई, वाउचिंग होता है पीएनएल आइटम्स का, वेरिफिकेशन होता है बैलेंस शीट आइटम्स का। बैलेंस शीट आइटम्स होता है फिक्स्ड एसेट इन्वेंटरी का, वेरिफिकेशन होगा, वाउचिंग होगा प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स का। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछा है अभी, नोट करते जाओ ये सब क्वेश्चंस को, वाउचिंग सर मैं तो वेरिफिकेशन। कोई गो थ्रू कर रहा हूँ, पूरी एक्सेल शीट ही रट लेता हूँ। वो बोल रहा हूँ, वाउचिंग लिखो, पीएनएल का होता है, वेरिफिकेशन बैलेंस शीट का होता है। ठीक है, और टीओडी वो होता है, टाइम कम है ना, पॉसिबल ही नहीं है इतना जल्दी। व्हाट इज एमआरएल? सर टी में एमआरएल क्या होता है? एमआरएल सर बेसिकली एमआरएल का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन which ठीक है, specifies the role and responsibility of auditor and auditee. ठीक है। And the third point is the MRL is shows that the management is given all the material disclosure information to the auditor. एमआरएल ठीक है, मोटा मोटी इसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे तुम टैक्स ऑडिट वगैरह किया होगा ना, तो उसमें एमआरएल लेता है बैलेंसेस का, कि ये बैलेंसेस कंफर्म करके मैनेजमेंट दे रहा है, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर की ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैलेंसेस है वो है। वो भी एमआरएल का पार्ट हो गया, डॉक्यूमेंट जो क्लाइंट ऑडिटर को देता है, कि वो बता रहा है, कंफर्म कर रहा है ये सब बैलेंसेस वगैरह। वो चीज क्लाइंट है जिसका मतलब तुमको दिया भी है, तुम पढ़ना हो डॉक्यूमेंट को। तो मेमोरी थोड़ा वीक है हमको जितना समझ में आया, मेमोरी भी वीक है सर थोड़ा सा। एक्चुअली हाँ, सर हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि वो लिंक का मैं कंफ्यूज हो कि आएगी कि नहीं आएगी, वो तो तो मैंने बात उसको पढ़ना सही ही। है। फिर ये सब चीज पहले भी थोड़ा सा था, पहले तो है। ठीक है, अब क्या ही कह सकते हैं, टाइम भी नहीं है। डू योर बेस्ट, और तो क्या है, वर्क थ्रू तो हो ही गया। आर यू गुड एट एक्सेल? वो बोलते ना एक्सेल, ठीक है। ठीक है, एक्सेल वर्क थ्रू प्रिपेयर्ड।
ठीक है, मेरे हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, कॉल पे बात कर लेते हैं, मेरे हिसाब से ठीक है। दोबारा तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, कॉल पे बात करके हम समझा देते हैं क्या क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके।